Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. In this video, we are going to discuss the current affairs for Himachal for the third week of July 2021. So if you haven't subscribed to the channel, please subscribe to the channel and hit the bell icon so that you are the first to receive the notifications as and when we post a video. And before we start the class, let me inform you that Abhimanyu's has started a new combined state civil services exam batch और इस बैच की जो ड्यूरेशन है वो 6 महीने होने वाली है and the best thing is that we are providing the entire history module totally free of cost. तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आज ही अप्लाई करते हैं, खुद को रजिस्टर करते हैं, then you can attend 20 to 25 days of free classes. The entire history module you can attend totally free of cost. और अगर आपको लगे that the quality of teaching is up to the mark, then you should go for the entire course as well. तो ये कुल 6 महीने का कोर्स होने वाला है जिसमें हम प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव से प्रिपरेशन करवा रहे हैं. So it will cover general studies from prelims as well as mains perspective, and it will also cover civil services aptitude test. That means your reasoning, maths, English, everything that is there in the aptitude paper will also be covered in this 6-month course. And it is a pre-cum mains course. So the general studies subjects will be covered from the perspective of prelims as well as mains. And no matter which state services exam you are preparing for, even if you are preparing for Punjab, Haryana, Himachal, Jammu Kashmir or any other state, 90% of the content remains the same. It is only the state GK that is different और वो भी हम आपको अलग से प्रोवाइड करवाएंगे. इसके अलावा जो 4 स्टेट्स हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, इसके रेगुलर करंट अफेयर्स along with the PDFs will also be provided to you, and it is in that direction that we are going to discuss Himachal current affairs in this particular video. Right? So do not waste time, do not lose this opportunity, because Abhimanyu's is a 22 years old institution in this region, responsible for the selection of more than 1500 students in state as well as union civil services. इस बार का भी जो पंजाब सिविल सर्विसेज का रिजल्ट रहा है उसमें 75% plus students have been from Abhimanyu's, and this record has been going on unfettered, especially in Punjab, Haryana and Himachal Pradesh. So be a part of the League of Toppers and join this course by clicking on the link in the description. So let us begin. देखते हैं इस हफ्ते हिमाचल में क्या क्या important हुआ है. The first important news is Kalka Shimla railway line is now set to improve with the rail coach factory designing the new Vista Dome coaches. So for boosting the tourism and for boosting the economy of the state, especially in the aftermath of the COVID-19 and the resultant lockdowns, basically the tourist arrivals in Himachal Pradesh came down by 86% last year. And considering that tourism contributes more than 60% of the state's economy, more than 60% of the state economy is directly or indirectly dependent on tourism. और ऐसे में अगर 86% यहाँ का tourism footfall कम हुआ है 2020 में, and it is going to be the likely scenario in 2021 as well, at least for the first half. तो ऐसे में tourism और economy को revive करने के लिए बहुत कुछ कर रही है हिमाचल की government. And in that direction, now the Kalka Shimla railway line, which is also a UNESCO World Heritage. So it has been categorized as a UNESCO World Heritage Site by UNESCO, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. So अब यहाँ पर इसे और tourism के लिए attractive बनाने के लिए Vista Dome coaches चलाए जाएंगे, which are on the theme of the Swiss coaches which are there in the Switzerland. तो रेल कोच फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर करेगी, एंड हिमाचल प्रदेश इज टेकिंग कीन इंटरेस्ट टू रिवाइव दिस प्रोजेक्ट. मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का ये इनिशिएटिव है इन कंजंक्शन विद द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ताकि स्टेट ऑफ द आर्ट पैसेंजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाया जा सके. प्रेजेंटली जो ये कोचेज हैं ये इंटेग्रल कोच फैक्ट्री या ICF चेन्नई में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, लेकिन अब से ये रेल कोच फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होंगे. एंड very interestingly, these will be the first narrow gauge Vista Dome coaches, because there are broad gauge
Vistadome coaches in some places, but narrow gauge Vistadome coaches will be developed for the first time. Or इसमें panoramic windows will be there. So many facilities have been provided. Like the speed will be a bit more. Then modern safety features like CCTV, fire alarm, etc. will be there. But the most important attraction for tourism will be the panoramic windows, see-through glass rooftops, and aesthetically textured interior panels, along with reclining seats and all those things which are there in a luxurious tourism travel. And these NG coaches were earlier built on Kalka Shimla railway track, but now they will have a totally new outlook. So, as I have already told you, Kalka Shimla railway line is a UNESCO World Heritage Site, and its tourism potential is unlimited because it is not a very big tourist attraction right now. So, that is why it is being upgraded now. So, it has multiple dimensions to it. The tourism sector, number one. Secondly, economy. Thirdly, employment generation, because many new halts will be decided and there new type of opportunities can be developed. Already the Himachal Pradesh government is mulling about a travel card, a smart card which will be able to be used across multiple mobilities. Like same card can be used for rail travel, same card can be used for taxis, for local buses, etc. So it will be integrated with that IT infrastructure as well. नेक्स्ट अगेन एक न्यूज़ है जो थोड़ी बहुत इकोनॉमी से और थोड़ी सी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. Amazon, the giant company of US, for the e-commerce giant. So Amazon is set to acquire apple and stone fruits and vegetables in Himachal Pradesh. So जो फार्म लॉज कंट्रोवर्सी ऑलरेडी चल रही है उसी के डायरेक्शन में ये एक चीज़ है. इसे किसी भी तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है. बेसिकली देयर आर मेनी प्राइवेट प्लेयर्स लाइक रिलायंस, बिग बास्केट, Amazon, etc., which are going to play their role in the procurement of apple, stone fruits and vegetables in Himachal Pradesh. तो Amazon ने अपना पहला कलेक्शन सेंटर खोल लिया है हिमाचल प्रदेश में इन बलाग, and it will help farmers and growers get good prices for their produce. तो उन्हें अपने प्रोड्यूस का अच्छा प्राइस मिल सकता है. अभी तक जो फार्म लॉज इंप्लीमेंट होने से पहले सिनेरियो था वो ये था कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज हैं, सो APMC, विच इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट committees. So these APMCs were kind of the monopolies where the farmers were bound to sell their produce. लेकिन अब फार्म लॉज के आने के बाद से the APMCs are no longer a restriction, they are actually an enabler now. So APMC ने भी सारी प्रिपरेशंस जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं कि जो नेक्स्ट एप्पल सीजन आने वाला है इसमें किस तरह से प्राइवेट प्लेयर्स को भी इंक्लूड किया जाए. एंड द मंडीज अक्रॉस द स्टेट वुड बी मेड ऑनलाइन विद इन अ मंथ. एक महीने के अंदर अंदर हिमाचल की सारी मंडीज को ऑनलाइन कर दिया जाएगा. सॉफ्टवेयर इज ऑलरेडी रेडी एंड द स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इज ऑल्सो इन द लूप. और एक बार जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा the farmers will be able to know the rates prevailing in different mandis at one click. कोई भी फार्मर कहीं पे भी बैठ के इंटरनेट से देख सकेगा कि किस डिस्ट्रिक्ट की मंडी में उसे अपनी प्रोड्यूस का कितना रेट मिल रहा है, एंड देन he or she will be able to sell it at any mandi of his choice. And traders will have to apply for license online. So all the work will be totally seamless. So it is a very fine example of e-governance where electronic governance or internet governance is being made a reality. तो इसके लिए कोल्ड चेन पॉइंट्स और कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर या फिर CA स्टोर्स बनाने का काम वॉर फुटिंग पे चल रहा है. एंड एक SIT जो बनाई गई थी, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो कि बनाई गई थी कि जो ग्रोअर्स हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स उगाने वाले जो ग्रोअर्स हैं, वो अपने पैसे ट्रेडर से रिकवर कर सकें. उसमें से 35 करोड़ ड्यूज में से 18 करोड़ ड्यूज हैव ऑलरेडी बीन गिवन, और आने वाले टाइम में इसे भी इंटरनेट के थ्रू करने का प्रपोजल है, विच विल एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द ऑपरेशंस, नंबर वन, because every transaction can then be recorded,
and then accountability can also be ensured. So transparency and accountability, the two hallmarks of good governance, can be ensured if across the domain information technology infrastructure can be put to use. And for that, agriculture, economy, then your horticulture, and governance or e-governance, all these dimensions are covered in this particular news item. तो इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं जहां भी आपने स्टेट में ई गवर्नेंस की एग्जांपल देनी हो, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है उसकी एग्जांपल देनी हो, या फिर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले रही है. सो ऑल दीज आर द डायमेंशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज़. So this is all that I had to discuss in this video. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, please like, subscribe and share it with your friends. Thank you and all the best for your exam.